रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज बार मेरे हमारे शास्त्रों में लिखा है, नाद तक बहुत साधना संगीत की करे तब पहुंच सकते हैं, पर अनहद नाद। एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे 14 ब्रह्मांड है, और 14 ब्रह्मांड के अधिपति देवों के देव महादेव के अलावा किसी की ताकत नहीं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में। शिव 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 धा दिन धा तिट का गा दि गन धा दिन धा तिट का गा दि गन धा शिव 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 आदि अनंत शिव आदि अनंत शिव भोले महादेव हर 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 महादेव। आपने दोनों हाथ भी ऊपर कर लिए, पर हर हर का नारा नहीं पहुंचा। आपको ऐसा लगता है कहाँ लिस्टर, कहाँ कैलाश में विराजमान भोलेनाथ। पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है, क्योंकि कबीर साहब ने अपने दोहा की साखी के दूसरे चरण में कहा है, इसके चींटियों के पैरों में पायल बजे वो भी साहेब सुनता है। मारो बापली एवो बे हाथ ऊंचा करी हर हर नारो लगाड़ो। मारो बागेश्वर सरकार राजी थाय, हनुमानजी महाराज राजी એટલા માટે થાય કે શિવનો 11મો રુદ્ર છે। आदि अनंत शिव भोले महादेव हर 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 महादेव शंभु भोलेनाथ। धन्यवाद। शिव समान कोई दातार नहीं,
लंदन में जोगी आया कि आके अलग 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 निरंजन सबसे बड़ा है तेरा नाम, ओ तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। ये जोगी आया लंदन में, जोगी आया दुनिया में अलग 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 सबसे बड़ा है तेरा नाम, ओ तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। हर 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 महादेव शंभो शंभो। तिलक और भाल चंद्रमानंद घर अलख जगायो। ओ अंग विभूति विभूति अंग बभूति, अंग विभूति गले रुद्रमाला शेष नाग लिपटायो। वाको तिलक और भाल चंद्रमानंद घर अलख जगायो। नगर में जोगी आया यशोदा के घर आया कि आके अलग अलग सबसे बड़ा है तेरा नाम, वो तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बोलो हर 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 महादेव शंभो महादेव शंभो महादेव शंभो। अरे ना जाने ये कौन सा जय गिरनारी महाराज। अरे ले दीक्षा निकली नजरानी कंचन थाल धरायो। लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर बालक मेरो डरायो। लेके भिक्षा ले 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 ले
अपने श्याम का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। चाहिए तेरी दौलत दुनिया और न कंचन माया, अपने गोपाल का दर्श करा दे मैं दर्शन को आया। नगर में जोगी आया, जोगीरा 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 जोगीरा, जोगी जोगी रे देखो यूके में जोगी आया। अरे जोगी बागेश्वर से जोगी आया। ओ सबसे बड़ा है तेरा नाम, ओ तेरा नाम भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भवम भवामि। किनको ये श्लोक मंत्र किसको मालूम है? अपने हाथ ऊपर करें तो आप गाएंगे, सभी गाएंगे। महाराज जी हमारे गुजरात में एक कहावत है, रशियो रूपड़ो रस्ताમાં છે પહોંચી ગયો છે। महाराज जी आ कहावत गुजराती में है, इनका हिंदी में अनुवाद करूंगा तो इसकी मजा मर जाएगी कि बीजाने खवड़ावीने खाय, जैसे आपका अन्न क्षेत्र चलता है बहुत जोरदार चलता है, उस बात को एक बार जोरदार अपने करतल ध्वनि से बताए, क्योंकि सीटी सीटी नो मारता भाई, सीटी ने होय सीटी नहीं। बीजाने खवड़ावीने खाय तो ठाकर राजी थाय, पण आ बधाने गवड़ावीने गाय तो ठाकर केवो राजी थाय। એટલે ગાવાનું છે પાછું। હાલો બધા ભેગા। ઓ કપૂર ગૌરમ તારમ संसार सारम भुज केंद्र, प्यार से सदा वसंतम भवम भवा। हजी 10% बेसी रह्या छे। એને એમ કે આપણો પાડોશી ગાય, એલા પાડોશીનું કરમ તમારા હાથમાં નહીં આવે સાહેબ। જમણા હાથે કરમ કરેલું જમણા હાથને ભોગવવું પડશે, ડાબા હાથનું કરમ ડાબા હાથને। જેને શ્લોક આવડતો હોય, ઓય વિસલ વાગે, જેને શ્લોક આવડતો હોય નો ગાય એને એની માના હમ છે ભાઈ। અને માથી મોટું કોઈ નહીં જગતમાં, જળધર કે જગદીશ સૌ કોઈ નમાવે શ્રી સંબા આગળ આલિયા। આનંદ કરવા માટે કહું છું, તમને કહું છું મારા બાપ, બાકી માતા પિતાથી મોટી કોઈ સંપત્તિ દુનિયામાં જગતમાં છે નહીં સાહેબ। આ દુનિયામાં જેની પાસે કરોડોની સંપત્તિ હશે, કરોડોની ફેક્ટરીઓ હશે, કરોડોની ગાડીઓ હશે, કરોડોની મિલકત હશે, એને તમે કરોડપતિ કહેશો, એને તમે પૈસાવાળો કહેશો ના। જેના ઝૂંપડામાં માવતર હશે મા બાપ સાહેબ, દુનિયાનો સૌથી અમીર માણસ ઈ છે। એટલે બધાય ભેગા થઈને આપણે બધા ભેગા થઈને ગાય, ઓ કપૂર ગૌરમ આ સંસાર સારમ ભુજગદ્રહારમ सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवान सहित हरे हरे शंभो शंभो। आ संतो કેટલા આપણે માટે ચિંતા કરતા હોય છે। આ જેણે લખ્યું છે એની પાસે જોડ્યો હર હર શંભુ એટલા માટે કે કોઈને શ્લોક ન આવડતો હોય, કોઈને ઉચ્ચારણ ન આવડતો હોય તો શંભુ તો આવડે ને ભાઈ। આમાં કેટલાય શંભુ હશે ભાઈ, એટલે ભેગા થઈ જાવ। હરે હરે શંભો 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 શંભો। એ ભગવાનનું નામ લ્યો। અમારા મહારાજજીનું એક ઉત્તમ ભજન છે, એને યાદ કરો તો આવે। કારણ गोविंद चले आते हैं, गोपाल चले आते हैं, गोविंद चले आते हैं, गोपाल। ગુરુદેવનું જબરદસ્ત ભજન આવ્યું છે, સાંભળજો। હું તો દરરોજ સાંભળું છું, અને સાંભળવું હોય એવું નહીં, પરમાત્માનું નામ લીધા જેવું કોઈ છે નહીં જગતમાં। કારણ કે સંત મહાત્મા ઈશ્વરદાસજી હરિરસ નામના ગ્રંથમાં કીધું છે,
नाम समो वड को नहीं ने जप तप तीरथ जोग नाम સમોવડ કો નહીં જપ તપ તીરથ જોગ નામે ના પાતક છૂટશે અને નામે નાશે રોગ એટલા માટે બધા પ્રેમથી ગાઈએ ગોવિંદ ચલે આતે હૈ ગોપાલ प्यार से गोविंद चले आते हैं गोपाल चले आते हैं भोलेनाथ 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 हर 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 महात शंभो भोलेनाथ बलिहारी मैया जुग जुग जी तेरो दायो ए गोकुलिए गमतू नथी मने गोकुलिए गमतू नथी ने ओली जमुना તમને પગે લાગીને કહું મારા માવતર કહું સીટી નો વગાડતા મારા બાપ અને સીટી વગાડવી હોય તો અહીંયા આવીને વગાડજો એટલે ગુરુદેવને ખબર પડે તો આખા વિશ્વને ખબર પડે કે તમારા વડવાઓ સીટીયું મારતા તમારી પરંપરામાં સીટીયું મારવાનું હોય તો સીટી મારજો બાબા આ સીટી મારવાનું ઠેકાણું નથી મારા બાપ અહીંયા ગોવિંદ ચલે આતે અહીંયા હનુમાનજી સાક્ષાત બિરાજમાન છે ભલા માણસ હા અને જમના લાગે ખારી ઝેર મારા વાલા વાલા નિહારે તે તવે એ તે તો સિદ્ધને કરાવ્યા શામળા પ્રેમ વિના પામે નહીં ને પછી ભલે ન હુનર કરો હજાર प्रेम बिना पामे नहीं भले ने हुनर करो हजार कहे छे प्रीतम प्रेम बिना तमने मळे नहीं नंदकुमार आ जगत में आवा हड़ाहड़ कलयुग में या तो तुम्हारी आर्थिक शक्ति थी या तो शारीरिक शक्ति थी तमे दुनिया में गमे ने हरावी सको विश्व में आपकी आर्थिक बल से या शारीरिक बल से किसी को भी हरा सकते हैं पर किसी को जीतना चाहिए अब अगर जीतना चाहोगे तो सिर्फ प्यार प्रेम से जीत सकते हो पूरी दुनिया को અને હિન્દુ શાસ્ત્રમાં સનાતન ધર્મમાં 33 કોટી દેવતા છે પણ પ્રેમ આખા જગતને શીખવાડનાર કૃષ્ણ પરમાત્મા અત્ર તત્ર સર્વત્ર જેટલો કૃષ્ણ ગવાણો છે એટલો બીજો કોઈ દેવ ગવાણો નથી અને આ પદ મારે એટલા માટે ગાવું છે કે પૂજ્ય મહારાજજી પણ એમની કથામાં ક્યારેક ગાતા હોય છે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાધા રણ છોડ છે એણે મને માયા તોને લગાડી રે માયા માયા જય હો
રાધાજીનો શ્યામ મારો રાધા રણ છોડ છે એને મને માયા જોને લગાડી રે માયા માયા જય હો જય દ્વારિકાધીશ મારો દ્વારિકા વાળો વાહ मन माया तोने लगानी रे माया माया ओ जायो ए तमे मने माया लगानी मारा साईबा तमे मने મારા જેવા સુદામાનો મિત્ર બોલ્યો રાધા રણ છોડ છે એણે મને માયા લગાડી રે માયા માયા ઓ મિતવા જય મુરલીધર મહારાજ और आज सुबह ही गुरुदेव से हमारी चर्चा हो रही थी, थोड़ा ज्ञान हमें दे रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तभी उन्होंने बताया कि गुजरात की धरती कितनी पवित्र है। नरसिंह हुआ, कबीर हुआ, मोरारी बापू, बापा सीताराम, કેટલી બધી ઘટનાઓને ગુરુજી યાદ કરતા હતા। ત્યારે मैं गुरुजी ने કીધું कि नरसिंह मेहता के ऊपर उनका केदार राग के ऊपर प्रसन्न होके 52 टाइम 52 बार तो खाली जूनागढ़ में आयो छे कन्हैयो 52 वखत 52 टाइम कारण के बहुत दयालु छे। मारी हुंडी स्वीकारो ने महाराज रे शामला गिरधारी नरसिंह मेहता के वक्त में उनके समय में चेक का था नहीं, तभी उन्होंने परमात्मा के नाम पे लिखी थी हुंडी, उसकी बात है। हे मारी हुंडी हुंडी रे हे मारी हुंडी स्वीकारो ने महाराज रे शामला गिरधारी हे मारी हुंडी शामलिया ने हाथ रे शामला गुरुदेव जब तबला का जन्म नहीं हुआ था तब ऐसे बड़े मुंह वाला तबला पहले बहुत पुराने जमाने में, फिर धीरे 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 इम्प्रूवमेंट होता हुआ तबला आया। पहले तो ऐसे दोकड़ था, बजाओ
બ્રાહ્મણ નથી વાણિયો, નથી ચારણ કે નથી કોઈ ભાટ, નથી બ્રાહ્મણ કે નથી ચારણ કે નથી કોઈ ભાટ, આખું ગામ કરે છે મારી ઠેકડી, એ નથી શામળ સાસે, એ નથી શામળ સાસે, એવું નામ રે શામળા ગીરધારી, મારી હુંડી શામળિયા ને હાથ રે શામળા. રામ गुरुदेव हमारे गुजरात में अभी एक ट्रेंड चलता है ना, एक एक गाना, एक एक भजन, एक एक कीर्तन, अभी जो चल रहा है वो प्यार का गाना है. वाला या तो वाला पुन्नु छेवा એને પાર તું વાલાયા તો વાલા પુન્નુ છે વાળ એને પાર તું તાર મારી આંખે ઉજાગરા દીને રાત ક્યાં રમી આવ્યા કાન રાત લડી રે વાલા થોડો હરખ તો દેખા वाला थोड़ो हरख तो देखा बड़ेला ने नाक बाल मारी नाखे उजागरा दिन रात क्या रमी आया कन रात आगे सो तमे क्या रमी आया कल रात लड़ी रे जय हो बांके बिहारी लाल के बापो बापो आ सरकारी इस पीस का नाम गुरुदेव हमने दिया, इस पीस को हम सरकारी बुलाते हैं गुजरात में. इस पीस का नाम बताया. एक हमारे जूनागढ़ का बेंजो वादक है जिनका नाम है जगदीश. वो 10 साल से बजा रहा है ये पीस. धीरे धीरे साहित्यकार जैसे कथावाचक बोलते हैं साहित्यकार, उसके पीछे धीरे धीरे ये बजाता था ये धुन. इनको मीटर में फीड करके हमने इस पीस को नाम दिया सरकारी. पीस चल गया, धुन चल गई. देखो अब ગાંડું થઈ ગયું આખું લેસ્ટર ઓ રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. એ
એ મારો રસિયો રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘેર જાવું ગમતું નથી. એ મારી માથે છે જમનાજીની હેલ રે, મારી માથે છે જમનાજીની હેલ રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. મારો રસિયો છે રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘીરે જાવું ગમતું નથી. સાધુજી 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 आइए चौबे जी एक ठुमका लगा लीजिए. અમે ગાયું તો યારે વિનય આવી ગયો ઘેર જાવ ગમતું નથી. નથી ગમતું રે વાલા ગાયું ને દોયા વિનય આવી ગયો ઘેર જાવ ગમતું નથી. એ હવે જોઈ લો વાછરડાના ખેલ રે, તમે જોઈ લો વાછરડાના ખેલ રે, ઘેર જાવું ગમતું નથી. મારો રસિયો છે રૂપાળો રંગ રેલિયો ઘીરે જાવું ગમતું નથી. પુષ્પા नाम सुन के भाव समझे क्या? ये ब्रांड नेशनल नहीं इंटरनेशनल ब्रांड है. इंटरनेशनल गुरुदेव, ये पुष्पा फिल्म के 2-4 डायलॉग है. कितना है जो पुष्पा भाई? मेरे को एक ही बात का गुरुदेव प्रॉब्लम है, इस फिल्म से मुझे कुछ लेना देना नहीं है. पुष्पा दो पार्ट में आया. पहले पार्ट में वो बोलता था कि झुकेगा नहीं. अब ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य था. हम चारण है महाराज, शिव के उपासक है, शिव के गण है, यक्ष किन्नर चारण गांधर्व सभी. तो हमारे गुजरात में कहावत है कि चारण जो बोलता है वो 100 साल में एक बार सच होता है. मेरा तो 2.5 साल में सच हो गया. ये फिल्म पहली पुष्पा में वो बोलता था कि झुकेगा नहीं. तब मैं हर एक कार्यक्रम में बोलता था कि सन्यासी हो 2 ही आदमी बोल सकता है पूरे विश्व में कि झुकेगा नहीं. एक तो कोई सन्यासी बोल सकता है और एक वांढा के वांढा कुंवारा जिसकी शादी न हो वो बोल सकता है झुकेगा नहीं. बाकी पढ़ना એટલે પતી ગયા સાહેબ. એ झुकी गयो झुकी. और उसके 2 साल में पुष्पा 2 आया. मैंने कहा कि झुकेगा नहीं, ये तो या तो सन्यासी बोल सकता है या कंवारा बोल सकता है. फिल्म के अंत भाग में उनकी शादी हुई, दूसरा पार्ट चालू होता है. तब उसकी पत्नी ने, धर्मपत्नी जी ने बताया, श्रीवल्ली जी ने, कि मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींचवा के आओ तुम. अब वो तो था ऐसा डामिस गुंडा जैसा, बिल्कुल मवाली जैसा.